Yes, good morning, student. The next exercise is 5.8 based on Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem. So the question number first is verify Rolle's theorem for the function fx is equals to question number first, function is given fx is equals to x square plus of 2x minus of 8 and x is defined, function is defined on closed interval minus 4 comma 2. So for the verification of Rolle's theorem, the given function is a polynomial. So how we will write, since the given function is a polynomial function, and every polynomial function is everywhere continuous and differentiable because polynomial function जो होते हैं वो everywhere differentiable and everywhere continuous. So अगर कोई function everywhere differentiable and continuous है, then fx is continuous on closed minus 4 comma 2. Then fx, second condition, fx is differentiable on minus 4 comma 2. And third, f of minus 4, that is minus 4 का initial point minus 4 पर function की value minus 4 का square plus of 2 into minus 4 minus 8, that is minus 4 का square 16 minus of 8 minus 8, that is 16 minus 16 is equals to 0. So the value of given function at initial point minus 4 is 0. Then f of 2 at the end point पर value निकालेंगे तो 2 का square plus 2 into 2 minus of 8, that is 4 plus 4 minus 8, again 8 minus 8 is equals to 0. So implies that f of minus 4 is equals to f of 2. So for the given function, fx is continuous on closed, fx is differentiable on open interval, and third condition, f of minus 4 is equals to f of 2. So Rolle's theorem is applicable. Rolle's theorem applicable. Now for verification, please pause the video and note down. For verification, what we will do? Now we will find the first derivative of given function and we will put equals to 0 and solve for at least one point which belongs to open interval AB. So applicability of Rolle's theorem के बाद, then अगर Rolle's theorem applicable है, then next, then there exists at least one point x is equals to c belongs to minus 4 comma 2 open interval such that f dash c should be equals to 0. Here fx is equals to क्या दे रखा है, x square plus 2x plus 8. So f dash x किसके बराबर होगा, 2x plus 2. Now f dash c should be equals to 0. Now f dash c, that is 2c plus 2 should be equals to 0, implies that 2c should be equals to minus 2, implies c should be equals to minus 1. c की वैल्यू minus 1 होनी चाहिए और minus 1 belongs to minus 4 to plus 2. That is जो अपना सॉल्यूशन आ रहा है कि हमें फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालना
फंक्शन के पहले डेरिवेटिव को एट द पॉइंट c पर इक्वल टू 0 पुट अप करने पर जो c की वैल्यू आ रही है दैट शुड बी बिटवीन टू -4 टू 2, -4 से लेकर के 2 के बीच में होनी चाहिए। जो आपकी c -1 आया ये -4 से -2 के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। सो Rolls is verified. So Rolls is verified. So in this way we can verify the Rolls theorem. So hope the question first is clear. Please pause the video and note down. Now question number second. What is the second question? Second question is examine Rolls theorem is applicable to any of the following function. Can you say something about the converse of Rolls theorem from the example? First question is the function is given f of x. Question number first second का fx is greatest integer of x and x belongs to closed interval 5,9. 5,9. This is the closed interval. Given function is a greatest integer. So given function fx is the greatest integer and this function is neither continuous nor differentiable at the integral point of 5, 6, 9, 7, 8 and 9. So क्या लिखेंगे? Since given function fx is greatest integer function and greatest integer function is neither continuous nor differentiable at integral point given closed interval के integral point क्या क्या है? Integral point at x is equals to 5, 6, 7, 8 and 9. इन इंटीग्रल पॉइंट पर गिवन फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है। सो देयरफॉर Rolls theorem is Rolls is not applicable on closed 5,9. So Rolls theorem is not applicable on closed 5,9. Second thing, f dash x अगर अपन फंक्शन का निकालते हैं तो f dash x जो है गिवन फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है f dash x किसके बराबर होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऑन द गिवन इंटरवल f dash x क्या है? 0 है फॉर नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। f dash x 0 फॉर नॉन इंटीग्रल belongs to 5,9. Therefore converse is not true. So converse is not true. So pause the video and note down. Now second question. Second question is fx is equals to again greatest integer function दे रखा है -2 से 2 पर। So again greatest integer function is neither continuous nor differentiable on the integral point -2 से लेकर के +2 के बीच में इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन से होंगे? -2 2 +2 पे देखो -2 -1 0 1 and 2। तो इन all 5 इंटीग्रल पॉइंट पर फंक्शन ना कंटीन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। सो सेकंड क्वेश्चन में भी आपका क्या होगा? अगर fx जो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है
belongs to open interval minus 2 to plus 2, then Rolls is not applicable. So Rolls is not applicable. Then अगेन इस फंक्शन का भी पहला डेरिवेटिव नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर f dash x 0 के बराबर होगा, therefore कन्वर्स इज नॉट ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, x स्क्वायर माइनस 1x. क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड पार्ट, f of x is equals to x square minus 1 and it is belongs to where x belongs to 1 comma 2 closed interval. The given function is a polynomial function. Given function is a polynomial function and the polynomial is everywhere differentiable and everywhere continuous. So for this, Rolle's theorem is Rolle's theorem is applicable or not. This for the verification. First of all, it is continuous on closed 1 comma 2, and second, it is differentiable on open interval 1 comma 2. बट थर्ड कंडीशन देखते हैं, f of 1 जो है इसका 1 minus 1 0 and f of 2 जो है आपका 4 minus 1 that is 3. So f of 1 is not equals to f of 2, therefore Rolle's is not applicable. पहली दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है बट तीसरी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है. So Rolle's theorem is not applicable. Not applicable. This is the verification of Rolle's theorem for the question number third. Now for the converse के लिए Rolle's theorem is not applicable. अब अपन पहला डेरिवेटिव निकालते हैं. तो given फंक्शन का पहला डेरिवेटिव f dash x जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 2x के, और f dash x को मैं अगर 0 के बराबर पुट करूं तो 2x बराबर 0 means x बराबर 0 and 0 is not belongs to 1 comma 2, therefore Rolle's theorem is not verified. So that's very simple question. Please pause the video and note down. Now let us see question number 3. Question number 3 is verify. एक फंक्शन दे रखा है, f is defined from -5 to +5 is the domain element and the range element is r. Now question is f is -5 to +5 to r is a differentiable function and f dash x does not vanish anywhere. Then prove that f of -5 is not equals to f of 5. ये अपने को प्रूव करना है. तो गिवन क्वेश्चंस के लिए क्या होगा कि let if we suppose f of -5 is equals to f of 5. अपन ऐसा मान के चले कि let f of जो -5 है वो अगर f of 5 के बराबर है, if f of -5 is equals to f of +5, then f would satisfy the condition of Rolle's theorem. F would satisfy all the condition of Rolle's theorem. Then f would satisfy all the condition of Rolle's theorem. तब रोल्स की सारी जो कंडीशन है इस पर सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है. Hence there should exist at least point
then there should exist at least one point x is equals to c belongs to minus 5 to plus 5 such that एवरेज c जो है वो क्या होना चाहिए आपका 0 के बराबर होना चाहिए but एवरेज x does not vanish ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है there is not vanish अगर एवरेज x वैनिश नहीं हो रहा है एनीवेयर इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन अपन ने मान के चला है दैट इज आर एजम्पशन जो अपन ने मान के चला कि f ऑफ जो -5 है वो f ऑफ +5 के इक्वल नहीं होना चाहिए hence proof. So please pause the video and note down. It's a very important question. The next question. Question number 4. Question number 4 is verify LMVT for the function fx is equals to f of x is equals to x square minus 4x x square minus 4x minus 3 where x belongs to 1 comma 4 x belongs to 1 comma 4 closed interval. So here LMVT verification के लिए since the given function is a polynomial function fx बहुत शॉर्ट में लिखे fx is a polynomial function and polynomial function जो होता है polynomial जो function होता है polynomial function is everywhere continuous and differentiable. Therefore it is continuous on closed 1 comma 4. Number 2, it is differentiable on open interval 1 comma 4. Then there exists at least one point x is equals to c belongs to 1 comma 4 open interval such that f this x will be equals to f of b minus f of a upon b minus a. That is f this x will be equals to f of 4 minus f of 1 upon 4 minus 1. Here the function is x square minus 4x minus 3. So first derivative will be 2x minus 4 बराबर f of 4 x में जहाँ 4 पुट अप करेंगे तो 4 square minus of 16 minus 3 into 1 square 1 minus of 4 minus 3 whole upon 4 minus 1 that is 3. So for next solution देखिए 2x minus 4 will be equals to this will be 16 minus 16 will be 0 so minus 3 minus of so minus 3 और यहाँ बचेगा 1 minus 1 minus 7 plus 1 minus of 6 so minus of minus 6 plus 6 upon 4 minus 3 4 minus 1 3 so this will be equals to 3 upon 3 that is 1 so 2x will be equals to 1 plus 4 so x will be equals to 5 by 2 that is 2.5 and 2.5 belongs to open interval 1 comma 4 therefore LMVT is verified. तो हमें क्या करना है एक बार फिर से देख लीजिए गिवन फंक्शन पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल आपको पूरा यहाँ लिखना है कि fx is polynomial function and every polynomial is everywhere differentiable everywhere continuous जो भी polynomial function है वो for all real number everywhere differentiable और continuous है तो गिवन फंक्शन के लिए इंटरवल 1 comma 4 दे रखी है तो इट इज कंटीन्यूअस ऑन क्लोज 1 comma 4 इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1 comma 4 देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x belongs to 1 comma 4 such that
वहां पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, जो वेरिफिकेशन की मेन कंडीशन है LMBT की। तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव f डेश x क्या था, x स्क्वायर का 2x माइनस 4 और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अपॉन एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सॉल्व करके x की जो भी वैल्यू आ रही है वो गिवन इंटरवल 1,4 ओपन में कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए जो 2.5 पर एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर LMBT is applicable and verified. Now last question. Verify the LMBT for the function f of x is equals to x cube minus 5x square minus of 3 on the closed interval 1,3. Again see the given function is a polynomial. So solution में क्या लिखेंगे, fx is a polynomial function and a polynomial function is everywhere continuous and differentiable. Implies that number one, it is continuous on closed 1,3. It is differentiable on open 1,3. Then there exists at least one point x is equals to c belongs to open interval 1,3 such that f dash x will be equals to f of b minus f of a upon b minus a. That is f dash x जो है वो किसके बराबर होगा, f of 3 minus f of 1 upon 3 minus 1. Now f dash x क्या है आपका, where f dash x is 3x square minus of 10x, ये फंक्शन का पहला डेरिवेटिव है। नाउ f3 का मतलब गिवन फंक्शन में जहां है x है वहां 3 पुट अप करें तो 3 का क्यूब 27 minus 9 5 45 minus of 3, this is your f of 3 minus f of 1, गिवन फंक्शन में जहां x 1 पुट अप करें 1 minus 5 minus of 3 upon 3 minus 1. So 3x square minus of 10x will be equals to, देखिए 48 में से 27 जाएगा तो 48 minus 27, 8 में से 7 1 2, that is your minus of 21 और 1 minus 5 minus 8 plus 1 minus 7 ये आपका plus 7 upon 3 minus 1, that is 2. तो minus 27 plus 7 minus of 14 divided by 2, minus 14 divided by 2 minus 7. Now इसको सॉल्व करना है आपको। So 3x square minus of 10x plus of 7 is equals to 0. Now factor करेंगे 3x square into 7, 21x square, 21x square के ऐसे दो फैक्टर करने कि सम करने पर माइनस 10x हो और प्रोडक्ट करने में 20, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन ले ले, x माइनस 1 माइनस 7 कॉमन ले ले, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, so x minus 1 into 3x minus 7 will be equals to 0. तो either x बराबर 1 और x is equals to 7 by 3. 7 by 3 means 3 2 ja 6, 2 right, 1 by 3. So these are the 2 points. जिसमें x is equals to 1 not belongs to 1,3 open interval. This 2,3 belongs to open interval 1,3. Therefore LMBT is verified. So
you like this video, please like it, share it, and subscribe it. In next video, we will do the application part of derivative, that is first exercise 6.1 and so on. Thank you a lot.